नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम टू इन्वेस्टलॉजिकल। मैं हूं अमिंदर सिंह। शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की बात अमिंदर के साथ। रीसेंट न्यूज़, ट्रम्प ने यूएस इलेक्शन जीत लिया है एंड ही इज़ द करंट प्रेसिडेंट नाउ। इसके पहले भी ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग इज़ द एजेंडा जो ट्रम्प फॉलो करते हैं या ओवरऑल यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट फॉलो करता है, इट इज़ मोर ऑफ स्ट्रेंथनिंग यूएस पावर ग्लोबली। तो देर वुड नॉट बी मच डिफरेंस। ये सेम चीज़ चलेगी यूएस के साथ में, यही सेम चीज़ चलेगी ट्रम्प के साथ में। तो द फोकस वुड बी टू स्ट्रेंथनिंग यूएस का पोजीशन ग्लोबली। नॉर्मली यूएस को देखें हम लोग, मिडल ईस्ट में काफ़ी इंटरफियरेंस रहती हैं, जियो पॉलिटिकल्स में काफ़ी इंटरफियरेंस रहती है। दे आर रूमर्स एंड few news coming up that even in Bangladesh, CIA and US agency was active to get the president change or the prime minister changed in Bangladesh. So US अपनी इंटरफियरेंस, अपनी प्रेजेंस हर जगह स्ट्रेंथनिंग करने की हमेशा इंटरेस्ट में रहता है। मेन उनका जो फोकस रहता है टू स्ट्रेंथन द यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होने के साथ में वो अपनी एक इकोनॉमी पावर दिखाना चाहते हैं एंड दैट स्टिल प्रिवेल्स। वी ऑल लिव अंडर दैट थिंग एंड ट्रम्प इज मोर ऑफ getting things manufactured and produced in US. So I personally find it very difficult to happen because we have the growing economies or Asian economies or the developing and the underdeveloped economies. All of them have a better cost advantage. Even after जब US उस चीज़ को import करती है, the prices are still very less. हाँ, बट ये चीज़ रहेगी कि ट्रम्प का जो चाइना के अगेंस्ट जो पॉलिसी है, दैट विल बी अ बिट थिंग टू बी वॉच्ड अपॉन। इफ द यूएस पॉलिसीज अगेंस्ट चाइना, सैंक्शंस अगेंस्ट चाइना रिमेन स्ट्रॉन्ग, तो यू विल फाइंड थिंग्स benefiting other Asian countries, and one of the strongest beneficiary can be India out of the whole geopolitical stuff. And dollar strengthen करने का है, like a lot of even the Federal Reserve and a lot of central banks have purchased dollars, which has hit Indian rupee to a new low. For 84.3235 the price what I have last seen. So that thing would be there US election के हिसाब से. So basically अगर आप ये समझे तो जैसे US का एजेंडा है, हर एक पावर का, हर एक इकोनॉमी का, हर एक सेगमेंट का, सब अपने अपने एजेंडे पे चलते हैं. I got a lot of calls before and after US elections. I was traveling the last whole week, and I got a calls. We had a lot of conversation. Boss, Trump आएगा तो इंडिया के लिए अच्छा होगा. I don't find any big thing happening. See, understand there are a lot of factors. US कुछ like with Trump coming in power, certain segments of Indian industry might benefit and certain might not. ठीक है, तो those things would be something to watch upon. तो हर एक जो एजेंडा है अगर आप देखें तो अभी इंडिया के अंदर काफ़ी स्टेट्स में इलेक्शंस की बात चल रही है. इलेक्शंस चालू होंगे. लाइक इन महाराष्ट्र दे आर इलेक्शंस ऑन 20th of November. एंड on this, like I just one more thing to add on कि 20th November को स्टॉक मार्केट्स बंद रहेंगे just because of these elections. So if you see these things politically,
तो every party is playing on their agenda. Their target is just to get into the power, right? The promises are made, most of them are still unfulfilled. Like अगर आप 20 साल पुराने भी promises देखें, the same promises are still carried on. So the main target is to win the elections. Apart from this, like in elections in India, even two countries like Germany and Canada are also having elections in coming few months or something. So again, इतना बड़ा impact नहीं है इन countries का. तो just understand what agenda what these countries fight elections on versus what is the agenda of what we fight elections on, या हम लोग वोट किस एजेंडे के ऊपर देते हैं. So that is something very interesting to understand and learn from something from these economies and countries. Both are very different. India is a very different gameplay compared to rest of the world. The requirements of India are very different. The connect, the psychology, the needs, the wants, they are very different than rest of the world. बस एक वेस्टर्न कल्चराइजेशन जो हो रही है, that gets people get carried away with that. But overall, if you see, the overall scenario is very different with the country like India. अगर आप देखें, चाइना हैज़ declared a 1.4 trillion dollar loan package, which is not stimulus. So China is parallelly working, like ये आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था शायद about this loan package. So China is parallelly working to I believe कि this is to overcome what Trump's policy might impact with China and their economy. So China is working on that in a very parallel way. अभी अगर इंडिया में आके IPOs की बात करें, स्विगी का a lot spoken about IPO that has oversubscribed 3.6 times. और इंटरेस्टिंगली वापस से अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, सो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दीज IPOs एंड देयर वैल्यूएशंस. लास्ट डे पे इनकी सब्सक्रिप्शन आई है, पहले दिन 2 दिन कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं थी. इफ़ यू गेट डीपर इनटू द नंबर्स एंड दिस थिंग, लाइक जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो उनको हायर किया जाता है, उनकी जो मोटी फीस रहती है, दैट इज़ प्रिसाइजली लाइक वो समझ आता है कि किस चीज़ के लिए रहती है. कि लीड मैनेजर्स जो रहते हैं, दैट इज़ टू गेट देयर स्टफ ऑफलोडेड टू द इन्वेस्टर, टू द रिटेल पीपल, सो दैट their targets are fulfilled and the success is ticked कि भाई IPO सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन में गया है करके. Again, that is something you need to understand what is good for you. FIIs are selling in India. That is another reason why interest rate, why the dollar is appreciating and rupee is depreciating. That is possibly one of the reason why rupee has hit the new low. ये बहुत सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स जो रहती हैं, जो मैटर होती हैं. पैरेलली अगर आप कंपनी वाइज न्यूज़ देखें, तो टाटा ग्रुप इज इन टॉक्स विद सिंगापुर टू मेक टू फोरे इनटू चिप मेकिंग फैसिलिटीज़. तो इतना समझ आ रहा है कि एक टाइम पे जो टेलीकॉम सेक्टर पे बस था, एक टाइम पे जो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे बस था, ऑटोमोबाइल सेक्टर, दैट इज़ मूविंग टूवर्ड्स चिप मेकिंग. दैट्स व्हाट माय स्ट्रॉन्ग बिलीफ इज़. चिप मेकिंग फैसिलिटीज़ में एक अलग ही तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है. दे आर रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड, वो तो मिल जाते हैं, वो तो ट्रांसपोर्ट करके लेके आ जाओगे. But there is water, pure distilled water is required in chip making facilities. So that makes that thing a very crucial stuff.
राइट। एंड सिंगापुर की अगर आप इकोनॉमी देखें, एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर वो सी वाटर, ओशन वाटर को डिस्टिल करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं। सो दे हैव their विजन, दे हैव their टेक्नोलॉजी, and a group like Tata getting in that makes a very strong proposition for an Indian company, and parallelly for India, Tata does it again. So that's a very interesting thing. It's not just Indian companies who are going abroad. Brickstone is uh, planning to invest around $85 million in India. ये टायर बनाने वाली कंपनी है, one of the premium tires, and they are investing in India and for expansions and stuff. So again एक बहुत interesting proposition बनता है। एक इनडायरेक्ट विजन आ रहा है मुझे यहाँ पर कि द ऑटोमोबाइल सेल्स, द टायर रिप्लेसमेंट कैटेगरी, so that the consumption category of these stuff is creating a very different kind of demand, and that's the reason these people are coming into India. जेरोक्स की बात करें तो जेरोक्स जो कंपनी है, इट इज़ साइनिंग अप डील विथ TCS एंड HPCL। दोनों का अमाउंट मिला के $1 billion का है, 1000 मिलियन डॉलर, सो $1 billion का है ये डील। सो another interesting space what I understand from this news ki the foreign companies and the foreign companies still believe in the ecosystem, the technology, the skills, the quality of IT products and services. So TCS and SCL are beneficiaries of these two companies. So सब चीज़ें अपनी अपनी एजेंडा के हिसाब से चल रही है। व्हाट इज़ योर एजेंडा? व्हाट आर यू लुकिंग इन फॉर? आप क्या न्यूज़ के हिसाब से डर के इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में? लाइक हु विल कम इनटू पावर? मोदी आएगा, ट्रम्प आएगा, महाराष्ट्र में कौन आएगा, हरियाणा में क्या हुआ, MP में क्या होगा? आई डोंट थिंक सो इससे हम अपने विजन को इंटैक्ट रख सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहना चाहिए, जो साइकोलॉजी इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, पहले तो आपको अपने गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। देर इज़ नो अदर वे टू इट। यू हैव टू डिफाइन योर गोल्स, you have to define what quality of life you want, what quality of you can say social well-being you want, और उस चीज़ के लिए क्या पैसा लगना है, क्या नहीं लगना, एंड उस हिसाब से आपको अपने फाइनेंसेस प्लान करने पड़ेंगे। जब तक आप ये नहीं करोगे, ये आपको न्यूज़ रूमर्स ये आपको स्कैर करते रहेंगे। लाइक ट्रम्प था तभी भी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी हैज़ डन डिसेंटली गुड। उनके बाद भी इंडियन इकोनॉमी हैज़ डन ब्यूटिफुली, लाइक दैट्स नॉट मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बट वाई वेट फॉर दीज डिसीजंस टू कम अप? पिछले 10 सालों में मार्केट में करेक्शन नहीं दिखा है। अगर मार्केट करेक्ट होता है तो व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल पोजीशन? नाउ व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज economy is doing good. Economy might be doing good in coming future also. I'm very confident about it that it will be doing good in future also. Market is something else and economy is something else. अगर मार्केट की वैल्यूएशंस ज़्यादा है या मार्केट करेक्शन पे आ रहा है, तो मार्केट जब करेक्शन पे आ रहा है तो इशू क्या है? That is an opportunity to buy at a lower level. So why people need to panic on that? Why you need to panic on it? अगर आपका गोल 5 साल, 8 साल, 10 साल दूर है, if you want planning for your retirement, like I had conducted one of the session and we just spoke about this thing कि हमें कार चाहिए। Like what are the kind of goals people have? आपको कार चाहिए, गोल में आपको घर चाहिए, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, घर लेना है, बच्चों की शादी करनी है, रिटायरमेंट, ये सारे गोल्स हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आप देखें ना, आपको कार लेनी है उसके लिए लोन मिल जाएगा,
आपको घर लेना है उसके लिए लोन मिल जाएगा, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, आपको वेकेशन पे जाना है, वेकेशन के लिए लोन मिल जाएगा आपको, हर एक चीज के लिए आपको लोन मिल जाएगा। व्हाट अबाउट रिटायरमेंट? रिटायरमेंट ऐसा गोल है जहां पर आप, जिसके लिए आपको गोल नहीं मिलेगा, जिसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट इज दैट काइंड ऑफ गोल विच यू विल नॉट गेट अ लोन ऑन। ठीक है, बहुत सारे मॉर्गेज स्कीम्स आ रही हैं, बट हाउ दैट्स नॉट द इंडियन कल्चर, that is not the Indian culture. What a person like us, like the people, what we are, we might be comfortable into doing that. That's a foreign this thing, right? वो इंडिया में acceptability नहीं है उस चीज़ की ज़्यादा, but this thing, retirement is such a goal जहाँ पर आपको लोन नहीं मिल रहा है. So what is your retirement life plan like? किस तरीके की लाइफ रहना पसंद करोगे? लाइक अनदर थिंग, लाइक हम लोग नॉर्मली ये बात करते हैं, योर पेरेंट्स आर नॉट योर इमरजेंसी फंड एंड योर चिल्ड्रन आर नॉट योर रिटायरमेंट प्लानिंग. Just imagine, just have a deep thought on this thing. It's a very serious thing. हम लोग आजू बाजू के न्यूज़ के करके why we are not getting the focus right of what we should do with our investments. So that's very important. That's very important. That's something what we need to look in for, right? You are in India, which is one of the most stable economies in the world. Putin is telling कि India should be declared as a superpower because of its growth and economic development. People are investing in India. Indian companies are investing abroad. It's a global player now. एंड इंडिया के अंदर आज के तारीख में म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 5 करोड़ फोलियोज हैं, 5 करोड़ पैन कार्ड रजिस्टर्ड हैं. ये रीसेंट नंबर है. Why are people not investing in India? Why are Indians not investing in India? ये स्केल बढ़ना चाहिए. दिस इज नॉट द स्केल. लाइक आउट ऑफ 140-150 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, ओनली 5 करोड़ आर देयर. इनफैक्ट डायरेक्ट इक्विटीज़ में, स्टॉक मार्केट में अगर जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हैं विथ, आई वोंट कॉल देम एज अ वेरी स्मार्ट एक्सपर्ट्स, राइट? वो मैं जानता हूँ, मेरे आसपास के लोगों को मैं जानता हूँ वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं. किसी ने बोल दिया, ले लिया, पैसा बन गया तो बन गया, नहीं गया तो भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ. और 80% ऑफ देयर पोर्टफोलियो ऑफ देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, व्हाट दे कॉल इट एज, वो उनके प्राइस से नीचे चल रहा है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 1 साल 2 साल 5 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट है. तो उस कैटेगरी में, इक्विटीज़ के उस कैटेगरी में 8 करोड़ पैन कार्ड्स रजिस्टर्ड हैं. सो म्यूचुअल फंड जो एक वेल रिसर्च्ड, एक डिसेंट सा प्रोडक्ट है, लेस रिस्कियर प्रोडक्ट है, तो उसमें लोग कम हैं. पीपल नॉर्मली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, सबको रिस्क की बात याद आती है कि भाई इसमें रिस्क है, इसमें रिस्क है. बट इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट फैब्रिक. 11 करोड़ से ज़्यादा पैन कार्ड्स रजिस्टर्ड हैं फॉर apps like Dream11 and those kind of betting apps, game betting apps. वहाँ पर 11 करोड़ पैन कार्ड्स रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉस इज हाईएस्ट. हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस के साथ में? हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ में, अपने वेलबींग के साथ में? That we have to decide. We have to make an agenda out of it. What kind of life, what kind of social well-being what we want, what kind of lifestyle we want. हमें अपना वो फैब्रिक करेक्ट करना चाहिए. That's a very strong thing what I am saying, right? So ये चीज़ करना बहुत important है. Understand your needs, understand your requirements. Everybody is, if you see, right,
everybody, every from top to bottom, nation, economy, industries, companies, sectors, everybody has their own agenda and they are working according to it. What about us? We are just gambling with our money. नहीं करना चाहिए यार. So these things these things should be taken care. These things are very much important, and these are the only things which will benefit for our healthy retirement, for our healthy lifestyle in long term. And obviously this will be the main contributing factor for the nation. If you are independent, you are an asset to the economy. आप एक तरीके की आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हो फॉर द नेशन ग्रोथ. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड, ग्लोबली, नेशनली, स्टेट वाइज जो भी चल रहा है, क्या भी मतलब वॉट एवर सिनेरियो इज गोइंग अराउंड, कुछ भी चल रहा है ना, उससे इम्पॉर्टेंट वी शुड बी वेरी क्लियर दैट वॉट वी एक्चुअली नीड. जब तक हम लोग उस चीज़ के ऊपर क्लियर नहीं होंगे, लाइक वी आर नॉट वेरी क्लियर किस चीज़ के लिए वोट करना है, किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना है. कोई गाड़ी अगर खरीद रहे हैं, कोई मोबाइल अगर खरीद लिए, वाई वी आर बाइंग दैट थिंग. फर्स्ट थिंग वी शुड बी वेरी क्लियर व्हाट वी नीड एंड वाई वी नीड. पहले तो वो क्लियर करें, और व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर लाइफ्स. अगर ये चीज़ क्लियर हुआ, देन वी गेट इन टू कि वेयर वी अलोकेट आर एनर्जीज, आर टाइम, आर मनी, हम लोग कहाँ अलोकेट करें उस चीज़ों को लेके. तो we are very clear on what we want, then we'll be clear where we invest our resources. Financially अगर बात करूँ तो our investment should be into strong, sensible and well managed asset classes. एक asset class में नहीं रहना चाहिए, FD में नहीं रहना चाहिए, सिर्फ FD में नहीं रहना चाहिए, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं रहना चाहिए, सिर्फ इक्विटीज़ में नहीं रहना चाहिए. इट शुड बी स्प्रेड अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस. आई हैव अ क्लाइंट ऑफ माइन जिनका मेजॉरिटी पैसा, लाइक ही वुड बी अ मिलियनर इन इंडिया डॉलर टर्म्स में, बट liquidity में, like they don't have liquidity. There is not sufficient cash flow to cater their needs. आज अगर कोई बड़ा डॉक्टर एक्सपेंसेस आ रहा है तो वी आर स्ट्रगलिंग टू अरेंज द लिक्विडिटी आउट देयर. सो ऐसा नहीं रहना चाहिए. इट शुड बी स्प्रेड अक्रॉस एसेट क्लासेस, वेल मैनेज्ड एसेट क्लासेस. आपको पता रहना चाहिए कि आपको लिक्विडिटी अगर लगेगी तो कहाँ से पैसा निकला है. So that one thing, if that thing is clear, your life is sorted, your investment is sorted. We cater in those kind of services. We have educational and training sessions with our investors and clients, where we discuss about their needs, wants, how to, like काफ़ी लोगों को ये clear नहीं रहता है यार मुझे क्या चाहिए, what I want to achieve. So a lot of people have this kind of issue, like they're not very clear what they want and why they want. So उस context में अगर हम लोग देखें तो एक we give certain amount of time उस session में हम लोग clarity लेते हैं. So that is the way it should be. You should discuss with your known person or financial advisor to get that thing or on track, or get some courses inducted where you can learn a lot of things about what actually can be done to achieve great things in life. So हर एक asset class की अपनी एक capacity रहती है, and main target should be to fulfill your goals. Once your goal is fulfilled, you are happy, the world is happy, and that's all for today. Have a great day and enjoy, my friends, and stay connected. Please subscribe to our channel. We are
trying to get some content every week, and possibly we'll be trying to enhance it furthermore. So we look forward for your support. Please subscribe to our channel. Thank you.